So finite automata with output. In this, we have two machines. The names are called as Mealy machine, and then there is Mealy machine. Okay. Now, just like the finite automata DFA, we also have the tuples. So DFA में कितने tuples होते हैं? DFA के कितने tuples होते हैं? 4, 5, 6, 7 कितने होते हैं? Tuples 5. तो सारे इंक्लूड करके सिर्फ finite automata with output don't have a final state. Okay, but we have 2 extra, so total we have 6 tuples which are used to identify the Mealy machine or Mealy machine. वो क्या क्या हैं? Q, sigma, Q naught. These are the same. ठीक है? These are the same, and delta also. ठीक है? Delta is also the same. Plus we have a capital delta, and then we have a lambda. Now what are these? So Q is, we know what is Q. Q is the states. So Q is the states, set of states. Sigma is the input. Q naught is the initial state, and delta is what? Q cross sigma gives us Q. Okay. So it's whenever we talk about finite automata, the delta is that of a DFA only. ठीक है, इसमें NFA वाला डेल्टा नहीं चलता, या ट्रांजिशन फंक्शन. द ट्रांजिशन फंक्शन इज सिमिलर टू योर what I was saying, DFA. Okay, DFA. Then we have capital delta. So capital delta is the output symbols. Output symbols, just like you have input symbol sigma, similarly you have delta, which are the output symbols. It can be 0, 1, it can be AB, it can be N. What is delta? Sorry, lambda. Lambda is the output function. Output function. So output function is the main thing because of which Mealy machine is different from a Mealy machine. Okay? The only difference between Mealy machine and Mealy machine is of the output functions. Okay? So अब देखते हैं output function का मतलब क्या है. पहले नॉर्मली मैं आपको सिर्फ एक ग्राफ बना के समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए. तो the idea of finite automata with output is that you give an input string, ठीक है, as a result the output will be another output string. Okay, you give an input as a string, it can be A, B, B, A, B, whatever, and in the output you might have a 0, 1, 1, 0, 1, whatever. Okay, so I mean, it's not to say that whenever A is there it is 0. I'm just giving an example. Okay, so you have to give an input string, the output will be an output string only. Okay, which is different from your NFA and DFA, because NFA will take in a string as an input, but the output will be a yes or a no in terms of either the string is accepted or not accepted. Yes or no? ये चीज आपको याद है ना? However, yes, ये concept, the rejection and acceptance concept, is not there in the finite automata with outputs. मतलब Mealy and Mealy machine में नहीं होता. There is no concept of acceptance or rejection. Whatever string you give to the machine, it will accept it and give some output. Now that output can be a desired output or not a desired output. That's a different thing. That's the dependency of the design of the machine. But it essentially means that there is no concept of rejection or acceptance of the string. ठीक है, तो इसीलिए अब हम लैम्डा की बात करते हैं. तो मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको. Q naught 0 Q1, ये तो आपका सिंपल ये आपका हो गया. ठीक है. In terms of Mealy machine, you have an output with the state associated always, which means the lambda
is like Q cross sigma. Sorry, not Q cross sigma. Q gives me the output only. Okay, which means that the output symbol is directly associated with the state. Okay, so that's one thing. Apart from that, let's just actually discuss the actual model of Mealy and Moore machines. तो मूरे मशीन देखते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है. सो क्या होता है, मूरे मशीन, ठीक है, मूरे मशीन. I'm just taking writing a transition table. Okay, so you have a state, you have next state, and next state is dependent on the input symbol 0 or 1. So this is input, this is also input, this is this, this is this, this is this, ऐसे हुआ. और यहाँ पे हमारा है output state, sorry, not output state, output state तो यही है. This is the output symbol, you can say. Okay, output symbol. Okay. Now suppose in this example we have sigma as a comma b and delta as x1, x2, x3. Okay, as per your example. We've got states A, B, C, D, B, 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 C, D, C, D, 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 and x2, x1, x2, x3. Okay, this is your transition function, which is also, this is your table, which includes both transition, this lambda also, as well as the delta, small delta. Okay, so it has this thing. So now please observe this thing, that A is associated with an output symbol x2, B is associated with output symbol x1, C with x2, D with x3. So since I was saying the delta means Q gives us the output symbol. Okay, this is what I was talking about. Is this thing clear? Is this thing clear? So ये table given रहेगा? हाँ, अभी मैं, हाँ, टेबल ऐसा गिवन रहेगा, या तो टेबल गिवन रहेगा, और आई एम शोइंग यू आल्सो द डायग्राम आल्सो, ग्राफ, कि हाउ दिस मूरे मशीन इज रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ. वो भी मैं 2 मिनट में शो करता हूँ. ठीक है, आपको गिवन होगा, डोंट वरी, आपको वो डिजाइन नहीं करना. हो सकता है डिजाइन का क्वेश्चन है, बट नॉर्मली डिजाइन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आइदर द डिफरेंस बिटवीन मूरे मशीन एंड मीले मशीन, और कन्वर्जन बिटवीन मीले एंड मूरे मशीन. ठीक है, मूरे टू मीले और मीले टू मूरे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कन्वर्जन. आज मैं सिर्फ आपको बेसिक, आपको इंट्रोडक्टरी सेशन दे रहा हूँ अबाउट मूरे एंड मीले. ठीक है, सो अब हाउ दिस डायग्राम विल बी क्रिएटेड वो देखो ध्यान से, बिकॉज वो थोड़ा समझना जरूरी है, बिकॉज नॉर्मली व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन ना, यू गेट द डायग्राम्स ओनली. ठीक है, तो कैसे होता है, A goes to 0 and 1, A goes to B and C, and यहाँ पे B goes to 1, 0, D. ठीक है, और D वापस अपने पे ही आ रहा है 0, 1. ठीक है, और भी है हमारे पास. So this is 0, this is 1. Now A के साथ मैंने कौन सा बोला था, आउटपुट एसोसिएटेड है x2. तो इस तरीके से हम लिखते हैं A/x2, B/x1,
C/x2, B/x3. This is a transition graph or diagram of Mealy machine. ठीक है? Clear? ये चीज समझ में आ गई? So this is how Mealy machine is designed. ठीक है? जब भी आपको दिखती है, ठीक है? अब बस एक बेसिक सी बात है. Suppose if I have given you a string, suppose I have given you a string. Input string is 1 0 1 0 1 1. Now, what will be the output string? Can you guys tell me? Obviously, we'll start with A. ठीक है? A पे output क्या आ रहा है? A पे output क्या आ रहा है? X2. X2 तो आएगा ही because it is the starting state. A on transition goes to, I mean, now we'll start from 1. ठीक है? 1, A on 1 goes to C. Yes, but what is the output? X2. X2. Similarly, बताओ आगे चलो. Move ahead. 0 पे X1. Sir, X3. X3. X1 क्या? X3. X1 किसने बोला? X3 होगा. Sir, X3 होगा. X3 हो गया. Then you go on 1. 1 फिर से वापस X3. ठीक है? X3 होगा. अब X3 आता रहेगा. X3 चलता रहेगा. ऐसे ही नहीं चलता रहेगा. एक बार ध्यान से देख लो क्योंकि एक चीज आपको समझानी जरूरी है. ठीक है? X3 आ गया. ठीक है. तो सॉरी. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है that if the in case of Mealy machine, if the input length is n, then by default, it's a natural thing that the input length will be n plus output length will be n plus 1. Obviously, क्योंकि पहला जो है तो वो तो without even reading the string we have to put as the output, है ना? इसीलिए n plus 1 हो जाता है. Are you getting it? Yes, sir. ठीक है? Is this clear? So when these are very trivial points, बड़े क्विज में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे. ठीक है? तो Mealy machine में ये केस है. If input string the length of the input string is n, then the output string length will be n plus 1. ठीक है? बट यहाँ पर तो 6 ही है दोनों में. 6 आ रहा है क्या? तो एक हमने X3 मिस किया है. एक्चुअली में 7 आने चाहिए. ठीक है? X2 ये इससे आएगा, ये इससे आएगा, ये इससे आएगा, एंड देन बाकी 3 उससे आएगा. ठीक है? सो या तभी मैंने कहा था एक बार ध्यान से देख लेते हैं. चलो अब Mealy मशीन देखते हैं. ठीक है? Mealy machine. Now Mealy machine has everything the same tuples. The difference is the delta, lambda. Lambda is Q cross sigma gives us delta, which means that just like the transition function, you have the output also. Output function is also dependent on the present state as well as the input symbol. Jabki in Mealy machine it was not the thing. In Mealy machine only one output was dependent on only one parameter. Here output is dependent on 2 parameters: the input state, which is the present state, जिसको बोलते हैं present state, and the input symbol. Input symbol. ठीक है? The output symbol is dependent on that. Now example के तौर पे you have a present state. ठीक है? Then you have input. ठीक है? Input equal to 0, input equal to 1. उनमें भी further division है. State and output. State and output. Okay, are you getting this point? Same thing, we'll keep it the same. We'll have sigma as 0 1 and capital delta as x1 x2
x3, same thing. It can be anything. A, B, C, D. You have B, B, D, D, B, B, D, D. Output is, मैं कहीं से copy कर रहा हूँ, so don't worry. x1, x2, x3, x3, and C, D, C, D, x1, x3, x1, x2. Okay, so this is how you get a transition function of a Mealy machine. It includes both transition functions, the output state transition function as well as output transition function. Okay. Now you can see that A is associated with two outputs, x1, x1. B is associated with two outputs, x2, x3. C is associated with two outputs, x3, x1. D is associated with two outputs, x3 and x2. Okay. Transition state transition, you know how it functions. Outputs transition function, you must be clear how it is different from the Mealy machine. Okay, clear? Yes or no? Yes, sir. Now, how the graph is created, we'll just see that. Okay, so it will be similar. A, we go to B, we go to C, we go to D, and then now very important thing to notice that A on 0 goes to B, you know, but output kya hai? X1. So instead of writing here, we write here x1. Okay, A on 1 goes to C, but what is the output? X1. So we'll write x1 here. So this is how we specify all of the transitions on the edge. Okay, B goes to B on 0, 0 Self-loop. and x2, self loop. B on 1 goes to D and x3. B on 1 goes to D and it will give me x3. Okay. C on 0 will go to D and it will be x3. C on 1 will go to C and it will be x1. 1 and x1. मैं कर लूं क्योंकि आपको फिर समझा. D on 0 goes to D and D. बहुत important है that you have two different loops. 0 on x3 and then you have another symbol, although एक गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करते, कॉमा लगा के लिख लेते हैं 1 and x2, 1 and x2. ठीक है, this is how we create, this is how the Mealy machine will look like. Mealy machine. Clear? Is this clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are the two major machines which are considered to be finite machines or finite automata with outputs. Okay, a conversion, there is a conversion, but we'll just see the major differences between Mealy versus Mealy. Okay, Mealy versus Mealy. First difference तो क्या है? First difference is in the output function. Output transition function का difference आप लिख देना. Output transition function. ठीक है? What is the difference between output transition function? ठीक है? Then one thing I did not tell. Suppose नहीं, just like we had this thing as n and n plus 1, here you have, if the length of input is n, then length of output is also n. This is in case of Mealy machine. So second difference is dependent on the relation between input length and output length. ठीक है?
ये आप अपने आप लिख लेना, मैं आपको अभी आई एम जस्ट गिविंग यू पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच यू विल स्पेसिफाई द डिफरेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। नाउ वन अच्छा, यहीं से निकल के एक बात और आती है, that Moore machine will give you some output even if there is no string input, whereas Mealy machine will not give you any output if there is no, क्योंकि I mean as we have seen that Moore machine gives you output even in the starting state, तो वो एक another function हो जाता है। देन लास्ट पॉइंट है, वो अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, वो कन्वर्जन के टाइम पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको पहले लिख देता हूँ। नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मूरे मशीन हैज मोर number of states and it has fewer. Mealy has fewer number of states as compared to Mealy. तो मूरे से मोर बन गया, वो वैसे समझ जाओ। इफ यू वांट टू कनेक्ट दीज थिंग्स तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन इट हैज व्हेन वी विल सी इन द कन्वर्जन ना, तो हमें समझ में और क्लैरिटी से आएगा दैट व्हेन यू कन्वर्ट अ मीले मशीन टू मूरे मशीन ना, द नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज। ठीक है, नॉर्मली दे इंक्रीज। और अगर वैसा नहीं भी है तो इफ यू आर लुकिंग एट द सेम type of input output combination, so if you have to create a Moore machine for that same Mealy machine, you will require more number of states to do the same operation। ठीक है, ये तीन मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन Mealy machine and Moore machine। आप लोग इंटरनेट पे और भी ढूंढ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट दीज थ्री आर मेजरली टॉक्ड अबाउट। ठीक है जी, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sorted. So मैं जरा इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ PDF में, तो क्योंकि ये आपके फिर PPT बन जाएगी जो मैं भी लिखा है मैंने। ठीक है ना? So I'll just stop now sharing। अभी अटेंडेंस कर लें फिर आपकी। Sir, last class का recording लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देखता हूँ यार, करी थी नहीं करी थी, मैं देखता हूँ। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? Arden theorem. Arden's theorem. आर्डेंस थ्योरम रिकॉर्डिंग की थी। हाँ, मैंने iCloud पे डाला, अपलोड किया, मेरे को याद है मैंने iCloud पे अपलोड किया वो, उसका रिकॉर्डिंग iCloud का ही लिंक है। मैं ना पीपीटी बनाता हूँ, उसका पीपीटी पे एक ही स्लाइड डालता हूँ, उसी स्लाइड में मैं रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दूंगा, वीडियो जो मैंने अपलोड। सारे रिकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में नहीं आ सकते, मतलब लिंक? यार iCloud में तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं वैसे वैसे टॉपिक्स की ना पीपीटी बनाता हूँ। पीपीटी में कोई मैं मटेरियल तो डालता नहीं, उसी पीपीटी में मैं ना सिर्फ एक स्लाइड डालता हूँ, उस स्लाइड में मैं वीडियो का लिंक शेयर कर पेस्ट कर देता हूँ। सीक्वेंस है, दैट्स इट सर। हाँ, वो पीपीटीज जो है वो आपके, और यार मैं सीक्वेंस में तो नहीं डाल रहा, बट जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, मैं आई एम जस्ट क्रिएटिंग द पीपीटीज अकॉर्डिंग टू द लेक्चर्स। मैंने आर्डन थ्योरम का हो सकता है मिस कर दिया होगा, बट आप देख लेना, मैं डाल दूंगा उसमें पीपीटी बना के। ठीक है, Okay, sir. कोई भी अगर फिर भी मिस रहता है, आपको लग रहा है नहीं है, तो आई विल स्टिल क्रिएट अनदर वीडियो, उसको मैं अपलोड करके डाल दूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. ठीक है ना? अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, मैं iCloud पे डायरेक्टली ले लेता हूँ। iCloud पे डायरेक्टली ले रहा हूँ मैं, बार डबल काम क्यों करना। अमित प्रेजेंट सर, अमित प्रेजेंट। प्रतीक मिश्रा, आर्यन Sir, present, sir. Present. प्रतीक प्रेजेंट, आर्यन प्रेजेंट, राहुल Present, sir. शिव वो भी प्रेजेंट है। ओके, आकाश, Present, sir. देन आयान,
Ayan not present. Ayan not present. Siddharth. Yes, sir. Chaitanya. Chaitanya. Present, sir. Chaitanya present. Ritik. Present, sir. Deepak. Present, sir. Andy. एंड एक बार एंडी को बोलो प्लीज एक बार मेरे से कनेक्ट करने को और विद द ईयर कोऑर्डिनेटर. अविकल्प. Present, sir. उज्जवल. उज्जवलदीप. Present, sir. Present, sir. प्रियांश. शिनोरा. Present, sir. Present. प्रियांश प्रेजेंट. शिनोरा प्रेजेंट. लक्ष्य. लक्ष्य सचान. Present, sir. स्वास्ति. Present, sir. अनिरुद्ध. Present, sir. विशाल. Present, sir. प्रियांशु. आकर्ष. प्रियांशु present था, उसका डिस्कनेक्ट हो गया अभी भी. ओके. आकर्ष. Sir, present. Akarsh. आकर्ष प्रेजेंट. नितेश. Present, sir. सौविक. कृष्णा. Krishna Reddy present, sir. शौर्य. ये इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा अगले क्विज के लिए. ध्रुव. Present, sir. अमन. Present, sir. अमन फगना प्रेजेंट. निहारिका. Present, sir. आयुष राज. Present, sir. शिवम. अंजलि. Present, sir. शिवम एब्सेंट है ना. शिवम नॉट देयर. उज्जवल सिंह. Present, sir. सुमित. Present, sir. सुशांत. Present, sir. आशीष राजपूत. Yes, sir. रोहन. रोहन सिंह भाटी प्रेजेंट सर. सर वो शिवम की भी लगा दे रहा हूँ, मैसेज कर रहा है. ओके. मैसेज आपको कर रहा है चैट बॉक्स में कर रहा सर वो मुझे को कर रहा है. है. ओके. समर्थ. So someone present, his mic is not working. ओके. यश. Present, sir. युवराज. Yes, sir. रेहान करीम. रेहान. नीतेश राज. Sir, Rehan Karim present, sir. रेहान प्रेजेंट. नीतेश Mic present. present. ओके. यूसुफ. Present, sir. आर्यन नगरकोटी. राज नगरकोटी. ये दोनों जोड़ो भाई. आदर्श. प्रेजेंट सर. मोहम्मद अरमान. Present, sir. आकाश सिंह परिहार. Present, sir. साल फरूक. रोहन गुप्ता. तान्या. Present, sir. प्रियंका. रुकिया. एब्सेंट. गरिमा. Sir, Garima present. Yes, sir. प्रेजेंट. ऋषभ राजपूत. अमन आरके. Then we have Aman RK. Abhishek Gautam. Present, sir. Aman Tiwari. Present, sir. Pratyush. Present, sir. लक्ष्य पाटनी. ये भी नहीं है. पौरू प्रेजेंट. आयुष जुयाल. यहाँ कैसे आ गया. आदित्य अग्रवाल. Present, sir. आदित्य प्रेजेंट. एंड एडू जोशुआ अभिषेक. सर यस.
सर शिव कुमार दुबे के भी लगा दीजिएगा सर, उसने मैसेज किया, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। शिव की लगा दी मैंने, शिव की तो लगी हुई है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आप ट्यूटोरियल क्लास लोगे आज G2 की? कितने बजे? 11:30 है सर। लेनी है तो ले लेते हैं। वो एक्चुअली मेरा अभी आज वो भी है, हैकाथॉन सर इवैल्यूएशन। हाँ सर, कुछ टीम्स हमारी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसलिए हो नहीं पाएगा। तो ट्यूटोरियल शीट शेयर कर देता हूँ, ट्यूटोरियल शीट कर लेना अपने आप लोग। ओके सर, ओके। डोंट ओके सर, चलो, ओके देन, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर।